ये आया क्या? कार्तिक आया? नो सर। चलो फिर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पूरा ही बना लो. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ law of conservation of angular momentum and applications of law of conservation of angular momentum that I have already discussed, but again I am giving you law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum, just like law of conservation of linear momentum in linear motion. So it states that when no external torque acts on an isolated system, then total angular momentum of system remains conserved or constant. Okay, it states that when no external torque acts on an isolated system, then total angular momentum of system remains conserved or constant. Mathematically L equal to constant. L means angular momentum, right? And if you have any law, then we have to be prove that. So prove करके बता रहा हूं आपको मैं. Proof. So we have to consider one isolated system. मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं ले रहा, डायरेक्टली प्रूव कर दूंगा. So consider an isolated system और rigid body भी ले सकते हैं ना. So we know कि टाउ क्या होता है. टाउ हमें पता है. We know tau is equal to dl by dt. Tau is equal to dl by dt means rate of change of angular momentum is equal to the torque. ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, right? And you know very well here we are applying no external torque. So if tau external equal to 0, therefore dl by dt is 0, and 0 is a differentiation of a constant. So L is equal to constant. Hence proof. कितना इजीली प्रूव हो गया देखिए आप. लेकिन इस लॉ के इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इस लॉ का. इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप देखें. So we know very well there is a relation between L and I, and L is equal to I omega. So if L is constant, so I omega is also constant. ये इसका consequence आ गया. It means omega is inversely proportional to I. If I is more, omega is less. If I is less, omega is correct. एक और चीज, also I1 omega 1 equal to I2 omega 2 equal to I3 omega 3 equal to I3 omega 4. कितना भी लंबा चले जाए आप, because these are constant. So if you know I1 omega 1 and you know omega 2, then you can easily find I2, or if you know I2 you can find omega 2. It means three quantities you know, you can find the fourth one.
right? Anybody have any doubt here? This already we discussed in previous lecture also. So अब मैं इसके applications बता रहा हूँ आपको, and applications are always asked in the examination. एक या दो जो भी applications of law of conservation of angular momentum. तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको बताता हूँ मैं, देखिए एक्चुअली इन ऑल दी एप्लीकेशन कंसेप्ट इज सेम. जब आपको एक एप्लीकेशन आ जाएगा तो आप बाकी भी कर पाएंगे. तो देखिए दिस इज अ राउंड टेबल. राउंड टेबल आपने देखी होगी, डिनर टेबल कई बार राउंड होती है, ऐसे उसमें कटोरियाँ लगी होती हैं बीच में भी, उसको मूव करते हैं और अचार नमक जो भी लेना सलाद ले लेते हैं. और कहीं डांस होता है वहां भी राउंड टेबल होती है. इन कंप्यूटर लैब ऑल्सो ए स्टूल इज देयर जो ऐसे गोल गोल घूमता है, आपने देखा होगा राउंड टेबल. ओके, तो इस राउंड टेबल पे एक पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड होल्डिंग वेट और डंबल्स इन हिज हैंड्स. उसके हाथ में डंबल्स हैं एंड ही इज स्टैंडिंग हियर. And the table is rotating with, थोड़ी बाल भी बना देता हूँ, अच्छा लगेगा. हाँ जी. And the table is rotating with some angular speed omega. Now, what happens when he folds his hands? जब वो अपने हाथ फोल्ड कर लेता है towards the chest, it means dumbbells are here now. Dumbbells are here, यहाँ आ गए ये. And then speed of rotation increases. टेबल जोर जोर से घूमने लगता है. जैसे ये मैंने हाथ स्ट्रेच किए हुए हैं और मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ टेबल पे. जैसे ही मैं हैंड स्ट्रेच करूंगा टुवर्ड्स माय चेस्ट, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस. व्हाई इट इंक्रीजेस? सो लुक हियर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड this is r. R means radius or distance from axis of rotation. अभी यहाँ पर r ये है, and when he folds his hands, r decreases. R decreases means moment of inertia decreases. When moment of inertia decreases, omega increases. तो मैं इसको लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए. when a person standing on a rotating table, when a person standing on a rotating table by stretching his hand, by stretching his hand and keeping weights or dumbbells in his hands. Sir, can you please repeat from starting? ओके, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ. लेट ए पर्सन, मैंने शायद वैन लिखवाया था, वैन हटा देना. लेट ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग टेबल. Let a person is standing on a rotating table, moving with angular velocity omega, full stop. The hands of the person are stretched. The hands of the person are
stretched and holding dumbbells or weights, Paragraph A. When person or man folds his hands, when person or man folds his hands towards his chest, when man folds his hands towards the chest, then speed of rotation increases, or table rotates with faster rate, यानी वो जल्दी जल्दी घूमने लग जाता है ऐसे। अब क्यों ऐसा होता है? This is because by folding hands, R decreases, therefore I decreases, क्योंकि I क्या होता है? mr square, है ना? And from law of conservation of angular momentum, I omega is constant, omega inversely proportional I. So as I decreases, therefore omega increases. Moment of inertia कम हो गया. And due to that what happens? Speed of rotation automatically increases. Automatically. तो लोगों को लगा ये जादू कैसे हो गया, पर वो जादू नहीं था. This is actually law of conservation of angular momentum application. Okay? अरे ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. मिटा रहा हूँ, डायग्राम मिटा रहा हूँ. सेकंड बता रहा हूँ आपको. सेकंड मीन्स एक वैलिड आंसर होती, वैलिड आंसर देखी होगी आपने. तो मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता वैलिड आंसर का, फिर भी कोशिश करता हूँ. वैलिड आंसर, तो वैलिड आंसर ऐसे डांस करती है, हाथ फैला फैला के, आपने देखी होगी. एंड जब वो जोर से घूमना चाहती है, रोटेट विथ फास्टर स्पीड, तो क्या करती है वो? अभी तो ऐसे है ना. दिस इज वैलिड आंसर, राइट? एंड द वैलिड आंसर इज मूविंग लाइक दिस. और स्केटर भी ऐसे ही करता है. बट व्हेन स्केटर, हाँ ये भी स्केटर ही मान लो आप. ये ऐसे वो एड़ी वाली चप्पल पहनी, स्केटर नहीं. ठीक है. एंड व्हेन शी फोल्ड्स हर हैंड्स टुवर्ड्स द चेस्ट, ऐसे अपने हाथ कर लेती है ऐसे. एंड कीप वन लेग ओवर द अदर लेग, इस लेग को इसके ऊपर रख देती है. देन शी कैन रोटेट वेरी फास्ट. आपने देखा होगा बहुत जोर जोर से घूमने लगती है. एंड द स्केटर ऑल्सो दे कैन रोटेट लाइक दिस. सो व्हाई? So same here. So look here. When a valid answer or skater wants to rotate fast, then she folds her hands towards the chest
Then she folds her hands towards the chest and keep one leg close to the other leg and keep one leg close to the other leg. तो अब इससे क्या होता है, इसको करने से देखो वही का वही खेल आ गया. By doing so, because this is axis of rotation and this is radius, by doing so R decreases, therefore I decreases, and from law of conservation of angular momentum I omega is constant, omega inversely proportional I. So as I decreases, omega increases, therefore speed of rotation increases. कितना बढ़िया तरीका है. पिक्चर्स में देखा भी होगा आपने कई बार कि पिक्चर्स में कोई हीरोइन है और हीरो उसके साथ डांस कर रहा है, तो हीरो कई बार उसको ऐसे उसका हाथ पकड़ लेता है बस, और वो लड़की ऐसे हाथ कर लेती है और गोल गोल घूमती है. She is using actually law of conservation of angular momentum. The same way here. Okay? यहाँ तक क्लियर हो गया. नंबर 3. मिटा रहा हूँ डायग्राम, मिटा दूं? No, sir. Yes, sir. Number 3, third application. A diver नहीं है. A diver perform number of somersaults. A diver perform number of somersaults before reaching to the water surface. Before reaching to the water surface. ये डाइवर है देखो, और यहाँ नीचे पानी है. तो डाइवर ऐसे खड़ा होता है, उछलता है ऐसे, पहले ऐसे याद है, फिर उछलता है, फिर गोल गोल घूमता हुआ आता है. तो वो कर्ल कर लेता है अपनी बॉडी को. जब वो कर्ल कर लेता है तो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है. वो ऐसे गोल गोल घूमता हुआ नीचे आता है, और जैसे ही नीचे आता है तो स्ट्रेट कर लेता है अपनी बॉडी. इट मीन्स बिफोर रीचिंग टू द वाटर सरफेस द डाइवर परफॉर्म्स नंबर ऑफ सोमरसॉल्ट्स. ठीक है, तो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं. देखिए, while diving diver curls curls his body. Diver curls his body by doing so R decreases, I decreases, I omega constant, omega inversely proportional I सारा का सारा वही आ गया. Omega increases, therefore diver perform number of somersaults before touching the water surface. Before touching the water surface, और सरफेस के पास जैसे ही पहुंचेगा वो स्ट्रेच कर लेगा, स्ट्रेच कर लेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा एंड ओमेगा डिक्रीजेस एंड देन ही वेंट इनटू द वाटर क्वाइटली. ओके, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है. सब जगह एक ही चीज यूज कर रहा हूँ. देखो नंबर 4 डायग्राम तो मिटा दूं ना? No, sir. जब मैंने मिटा दिया तो कहता नो सर. चल फिर से बना देता हूँ.
कोई बात नहीं सर। ये लो। You have seen a whirlwind, जिसे तूफान में हवा चलती है, ऐसे गोल गोल हवा घूमता है बहुत तेज, इन समर सीजन ऑल्सो। और कई बार कहते हैं कि इसके बीच में नमक मत डालो, डालोगे तो एक चांटा पड़ेगा। तो मतलब मजाक करते हैं बच्चे, मतलब वहां नहीं जाना। इवन यू हैव सीन इन टॉम एंड जेरी ऑल्सो कि समटाइम्स देयर इज ए स्टॉर्म देयर, और उस स्टॉर्म के अंदर सारे पूरा गांव टॉम एंड जेरी सब घूमने लग जाते हैं। बेंटेन ऑल्सो यू हैव सीन, बेंटेन में ऐसे गोल गोल आता है घूमता हुआ, और उसके अंदर वो घुस जाता है। दैट इज वर्ल्डविंड। वर्लपूल भी आता है, आपने वर्लपूल सुना होगा, वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, जिसमें ठंडी हवाओं के बीच में खाना रहता है बढ़िया, या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ऐसे, राइट। सो लिखिए, द स्पीड ऑफ इनर लेयर, the speed of inner layer of whirlwind is alarmingly high। बहुत हाई होती है इसकी, ये ऐसी होती है, आपको मालूम है, पानी में भी होती है। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है सेंटर वाली। Whatever is here, it can move inside, अंदर चला जाता है। क्यों? बिकॉज ये जो होता है इसका R मिनिमम होगा, and as R minimum, I is also minimum, and so omega is maximum. Here also we are applying law of conservation of angular momentum, वो भी यहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो look here, speed of inner layer of whirlwind or tornado is alarmingly high। तो हम लिखेंगे, लिख लो आप, the radius of inner layer of whirlwind, the speed of inner layer of whirlwind is minimum, that is I is minimum, So from law of conservation of angular momentum, I omega is constant, omega is inversely proportional I. So as I is minimum, therefore omega is maximum। क्या होगा? ओमेगा मैक्सिमम होगा। And due to that, speed of inner layer of whirlwind is alarmingly high। बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी। तो ये वाला लिखने पहले आप, fifth, spaceship you have seen, spaceship is moving in universe in vacuum in outside the planets in space, and if it has to take turn, then there is no action and reaction because nothing is there in space. So how to take a turn by the spaceship? So spaceship also takes a turn by using the concept of this. Which concept? Angular momentum. Spaceship takes a turn
in space by using the concept of law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. So it means angular momentum should always be constant if no external torque is acting on the system, right? So this is our spaceship. ये spaceship है मेरा, ठीक है ना? And spaceship को turn लेना. Now how to take turn? So there is a metallic disc attached here at the bottom, and this disc is connected with the motor which is inside the spaceship. तो ये spaceship है आपका, और spaceship में ये नीचे, ये देखो, ये यहाँ पर, ये इसको अंदर से घुमा सकते हैं हम. जैसे अंदर से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पेसशिप घूमने लग जाएगा. सो दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम अगेन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इसको मूव करेंगे इधर तो एंगुलर मोमेंटम विल चेंज, बट एंगुलर मोमेंटम शुड नॉट बी चेंज. सो व्हेन इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, इट इज मूविंग क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में. ये इधर घुमाएंगे तो ये इधर घूमेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो लिखिए a disc is attached at the bottom of spaceship. A disc is attached at the bottom of spaceship which can be moved with the help of a motor fixed inside the spaceship. जैसे ये अपनी दुर्वा का ये दिखाई दे रहा है ना, गोल, हम कैप्टन अमेरिका का स्टार वाला एक गोल ढाल जो होता है, गोल, ऐसी डिस्क होती है. सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल. A metallic disc is attached at the bottom of spaceship which can be rotated with the help of a motor which is fixed inside the spaceship. If disk rotates clockwise, anti-clockwise, नहीं clockwise. If disk rotates clockwise, so in order to conserve angular momentum, spaceship rotates anti-clockwise, that is in the opposite direction. In this way,
spaceship can take a turn in space. स्पेस में ऐसे ये टर्न होता है. ओके, लास्ट है को 6th नंबर. You have seen a cat also. Cat is very intelligent. Not only cat, but maximum animals. क्या करते हैं ये? Cat जैसे किसी छत पे चढ़ी हुई है, on the roof of a house, and when she jumped, then she used law of conservation of angular momentum. आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही वो जंप करती है, वो क्या करती है, अपनी टेल को पीछे फैला लेती है और हाथ भी ऐसे फैला लेती है. सो स्ट्रेचेस हर बॉडी, स्ट्रेचेस इट्स बॉडी, एंड ड्यू टू स्ट्रेचिंग व्हाट हैपेंस, आर इंक्रीजेस. व्हेन आर इंक्रीजेस, आई इंक्रीजेस, एंड व्हेन आई इंक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस. सो द कैट कैन सेफली कम टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे आके फिर छोटी हो जाती है और दौड़ के भाग जाती है. तो लिखिए 6 नंबर. When a cat jump from the top of a house, stretches its body and tail, so R increases, therefore I increases. क्यों I increases? Because I mr square, and from law of conservation of angular momentum, I omega equal to constant, omega inversely proportional I, as I increases, therefore omega decreases. Omega decreases. So cat can safely lands on the surface of Earth. Yani animals, they are also using, but they are not knowing that they are using law of conservation of angular momentum. वो तो ऐसा करते हैं, अपने आप बॉडी उनकी करवाती है, बट हमने अप्लाई कर दिया कि तुम लोग ये यूज करते हो. एंड at last this year actually we don't have the derivations of moment of inertia of different bodies. तो आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, इनके फार्मूले आपको लिखना है बस, ओनली. राइट? सर एक बार कैट एग्जांपल रिपीट कर दीजिए. कैट के एग्जांपल में यह है कि व्हेन कैट जंप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस, देन शी elongates, cat elongates its tail and stretch कर देती है अपनी बॉडी को ताकि बॉडी बड़ी हो जाए. तो व्हेन stretches its body, elongates its tail, stretches its tail also, then R increases. When R increases, then moment of inertia also increases. When moment of inertia increases, then omega